if the will is probated, that has been protected under section 307 of the Indian Succession Act. That is cannot be said to be illegal. लाइए इंडियन सक्सेशन एक्ट लाइए. So this is a transaction as per you. This order of mutation, whether it is protected under section 307 of the Indian Succession Act or not, we have to examine. क्या होता है गणपति बाबू की, आप लोग तामिला रिपोर्ट वाले में सरकारी महकमा में तामिला होता ही नहीं है. दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. इट में भी ऐसा नहीं कि हाँ हुआ हो, लेकिन तामिला रिपोर्ट जब आप खोजेंगे ना मुश्किल रहता है. In this case, my lords, the order contained in Annex 6 passed by Shri Ashok Vardhan, my lords, as member. पेज नंबर my lords 40 से शुरू है, 45 तक गया है. 45 में एक सेकंड देख लीजिए. 45. What had happened that in this case भूतिया लोगों ने एक जाली फर्जी विल करा लिया, अनरजिस्टर्ड. उसके प्रोबेट के आधार पर म्यूटेशन करा लिया. हमने दरखास्त दिया, 276 में उनका रिवोक हो गया. तो हमारे फेवर में एडिशनल कलेक्टर ने फिर ऑर्डर पास कर दिया हमारा. उसके बाद वो लोग गए बीएलटी में. अशोक वर्धन साहब का कहना है कि चूंकि उसके खिलाफ अपील पेंडिंग है हाई कोर्ट में, इसलिए हम डीसीएलआर के ऑर्डर को माने. एट पेज 45 मिनट्स का. This is the only submission. This is, my lords, the main submission. My lords, all the propositions, my lords, have. Lordship knows, my lords, that will itself is not enforceable, even in it. आप बताएं. My lord, in this case, the petition has been granted on the basis of a registered will, of a will, probated will, and on the basis of a finding recorded by the, on the basis of inquiry report, that the petitioner, that the respondents were in possession of the properties, and on that basis petition has been granted. That will is of 1998. It has been probated in 2004. Thereafter mutation has been granted. On the basis of mutation, they challenge the mutation for revocation of that will. But it is settled law that a revocation is never retrospective. The order of Anchal Adhikari cannot be questioned on the basis of a revocation of a will. Even the law is well settled that revocation of will does not revocation of the probate order does not nullify, makes the will null and void. So the question is, so what will be the effect of the will if it has been revoked? my lord, it will remain pending, my lord. That order will be null, awaiting the result of the appeal. So the list is pending, my lord. Now, even this act, Succession Act, protects the transactions made on the basis of probate will. If the will is probated, that has been protected under section 307 of the Indian Succession Act. That is cannot be said to be illegal. लाइए इंडियन सक्सेशन एक्ट लाइए. So this is a transaction as per you. This order of mutation, whether it is protected under section 307 of the Indian Succession Act or not, we have to examine. My lord, because my lord, my submission is if it is revoked, if it is will is revoked under section 263 of the Indian Succession Act, that is always prospective.
It cannot be retrospective. It is settled law by the Supreme Court as well as other high courts also, my lord. Now the question is, what is the order? What is the order of the additional collector? Because the order passed by the Anchal Adhikari has been confirmed on the basis of recording a finding of possession that he is in possession of the property, as well as supported by the will. Secondly, now additional collector does not record any finding on the basis of regarding possession. The appeal is pending where? Appeal before this High Court. Since which year? My lord, that is of 2018 perhaps. Why don't you move an application for early hearing of the first appeal? We will move that, my lord. Provided he cooperates, we are ready to do that. क्या चौबे जी जी, हियरिंग करा लीजिए। उससे कोई एतराज नहीं है, ये करा लें, उसमें अपील इनका है। इनका दूसरी बात, Lordship will kindly consider में म्यूटेशन करवा the दिया। order passed by the Anchal Adhikari is ex parte, and it is further submitted, एक्स पार्टी ऑर्डर, ex parte order. हाँ दिखाएं तो। Yes, Anchal Adhikari passed the order ex parte. That is, there is no dispute about that. And Lordship knows, my lord, the Supreme Court decision that sufficiency of opportunity at the appellate stage will not cure the defect of deficiency of opportunity at the original level. Ex parte order, that is what order. Secondly, my lords, now in 2016, I have given the proposition also. The Supreme Court says that not only possession, but coupled with title, that is the basis, my lords. And here, my lords, it is logical. If mutation was allowed merely on the basis of probate, ex parte probate, and if that has been revoked, my lords, that there is no basis, my lords, for continuing, my lords, the 2016 1 PLJR lordship. 197. Lordship, I have given. That says, my lord, that 2016 says that it must be followed. The revenue proceedings, the procedures established by law must be followed. My lord, in the present case, notices had been aam and khas suchna has been issued. Thereafter, this order has been passed. No, nothing, my lord, ex The parte. order has been passed. Tamila report is there. Nah, Yes, my lord. Where is it? Page number? after 5 किया है, उसमें भी नहीं दिया। Page number? My lord, that is the report of the 30. Page number 30. My lord. In the writ petition. Yes, my lord. Thirty, 31. And at page 32, एक मिनट, हाँ। there is a finding, my lord. अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। मूल रही जमाबंदी सब माल व्यर्थ करें, सूचना तामिला की प्रस्तुत करें। अभिलेख प्रस्तुत किया गया, प्राप्त हुआ है। वसीयतनामा का विदित होता है कि प्राप्त वसीयत सादा है, जिसके साथ आवेदक के सब्जेक्ट शो करा लिया है। इसके आवेदक पहले किसके नाम पे प्रॉपर्टी था? हमारे हस्बैंड के नाम में। कहाँ है वो? उनको नोटिस हुआ? ये कहाँ है? राम प्रसाद चौबे। हमको पढ़कर सुनाइए। नोटिस, सर्विस ऑफ नोटिस। और उनके मरने के बाद हर साल हम कटवाए हैं। दहिंदा में नाम हमारा है, रेंट रिसिप्ट सब हमारे पास है। अभिलेख प्रस्तुत किया गया, सूचना तामिला प्राप्त। पेज 33 पर पहला लाइन। सूचना तामिला प्राप्त। तामिला रिपोर्ट है जी, तामिला रिपोर्ट है। तामिला रिपोर्ट इन्होंने तो नहीं लगाया है। आपने लगाया? But it is a finding of fact that it is By the Anchal in the record itself. And this fact has been corroborated by the DCLR also. DCLR साहब ने भी अपने आदेश में Call for the records of the case.
The state will produce. कौन है स्टेट? कब मंगा रहे हैं रिकॉर्ड? 2 weeks. Call for the original records of the case. List this case after 2 weeks, 3 weeks. ऊपर में कर दीजिएगा हर्ड श्री कमल नयन चौबे सीनियर एडवोकेट एंड श्री, उनका नाम दीजिए, सबका, दोनों आदमी का नाम त्रिवेदी जी का दे दीजिए। श्री गणपति त्रिवेदी सीनियर एडवोकेट फॉर दी पार्टीज। क्या होता है गणपति बाबू की, आप लोग तामिला रिपोर्ट वाले में सरकारी महकमा में तामिला होता ही नहीं है। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, इट मे बी, ऐसा नहीं कि हाँ हुआ हो, लेकिन तामिला रिपोर्ट जब आप खोजेंगे ना मुश्किल रहता है। आई हैव डन अराउंड, उस जमाने में 2002-03 में जब गर्ग साहब थे तो सेल टैक्स का करीब हम लोग 200-300 केस यहां से अलाउ कराए थे, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ तामिला रिपोर्ट। टैक्स लगा, हाँ टैक्स लगाना है, नोटिस इशू किया, तामिला नोटिस का तामिला प्राप्त, ऑर्डर हो गया, और जब तामिला रिपोर्ट आया तो बस तामिला किया, कोई गवाह नहीं, लटका कर किया, कोई गवाह नहीं, कुछ नहीं, तो सारा रिमांड हुआ था। इसलिए तामिला रिपोर्ट, उस समय से हम लोग तामिला रिपोर्ट का भी सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करके फॉर पिटिशनर लेते थे। तबीयत ठीक है ना आपका? इन द मीन टाइम मिलोट सम, इन द मीन टाइम कुछ नहीं, क्या हो रहा है अभी? कुछ हो रहा है? आप डिस्पोजेस हुए हैं कि नहीं? हमारे नाम से रसीद का उसी के आधार पर आने दीजिए ना, 1-2 हफ्ता में फाइनल ऑर्डर कर देंगे। अब ठीक है, इंट्रीम करेंगे, फिर आप एलपीए जाएंगे, कोई जो भी जिनके फेवर में होगा या नहीं होगा। ठीक।